Hello friends, one more important video on the business modeling. Business modeling is one of the wide area where the entrepreneur and the business owner are having the least focus, because while we talk about the business modeling, they feel that how the business modeling is going to add the values in the business. But you see, one of the part in the business modeling, namely called the financial planning, सपनों का दुनिया, सपनों का दुनिया, आपके अपने सपनों का एनालिसिस, द फाइनेंशियल प्लानिंग. नो मैटर हु यू आर, which business you are deal for, if you go and see the small sector, medium sector, large sector, हर कोई अपने सपनों का एनालिसिस करता है. हर सेक्टर, हर कंपनीज, हर एंटिटीज अपने सपनों का एनालिसिस करता है. एंड व्हाई दे आर डूइंग द एनालिसिस ऑफ देयर ड्रीम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई वुड लाइक टू डिस्कस थ्रू दिस वीडियो that why it is an important part in your business to discuss about your dreams, to know about your dreams in your business. आपके बिजनेस में सपना क्या है, अपने सपनों का एनालिसिस कीजिए. एंड व्हाइल यू आर एबल टू डू द एनालिसिस ऑफ योर ड्रीम इन द बिजनेस, योर बिजनेस विल हैव द लार्जर अपॉर्चुनिटी. Imagine within yourself that you are starting a business as a small entrepreneur, started one of the startup. तो क्या करते हैं आप स्टार्टअप में? स्टार्ट कहां से करते हैं? While you are beginning the startup, at least you create a fund for 730 days. इतना तो रखते हैं कि मेरा बिजनेस 2 साल तक मैं उसको फंड का प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा. Isn't it? Yes. So 730 days you have the fund. Now start. कैसे स्टार्ट करेंगे? You started to find out the customer. Before you start to find out the customer, you are looking to your product or service, that what product and service you are going to serve or sell. तो जब आप ये प्रोडक्ट और सर्विस को सेल और सर्व करने की बात करते हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की रिकॉग्नाइजेशंस को देखते हैं. इजंट इट? आपकी वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस का क्या है. एंड यू आर स्टार्टिंग टू इंक्वायर इन द मार्केट, डूइंग सम मार्केटिंग, कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस का क्या वर्थ है, वेदर पीपल्स आर लाइकिंग टू योर प्रोडक्ट और सर्विस, वेदर एंटिटीज आर लाइकिंग टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस. ये स्टार्ट करते हैं. एंड व्हाइल यू आर गोइंग टू डू द मार्केटिंग, यू नो दैट व्हाट आर द वर्थ ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस. जब आप इस वर्थ को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने सपनों को एनालिसिस करना शुरू करते हैं कि व्हाट द सेल यू आर गोइंग टू डू, दैट प्रोजेक्शंस यू हैव, व्हाट द सेल्स यू आर गोइंग टू डू, दैट प्रोजेक्शंस यू हैव फॉर एटलीस्ट 1 ईयर. जब आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं 1 साल का, तो देखते हैं कि आप क्या सेल्स करने वाले, किसको सेल्स करने वाले हैं, हु विल बी द पोटेंशियल कस्टमर एंड हु विल बी द फर्स्ट कस्टमर, कैसे बेचेंगे, क्या सर्विस देंगे. दैट यू स्टार्ट टू फाइंड. सो यू हैव द प्लानिंग, एंड प्लानिंग नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, but what you have the revenue, what are the expenses that you are going to incur for, what are the assets that you are going to procure, what are the investment that you are going to do. हर चीज की प्लानिंग करते हैं. that planning is important. This is the first documentary. That basis of your first documentary, you start to engage to yourself in the business. ना आपका प्लानिंग हो गया कि आपका एक ब्लूप्रिंट, आपको एक पता चल गया कि आप क्या करने वाले हैं, कितना का सेल्स करने वाले हैं, कितना का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कितना का परचेज करने वाले हैं, कितने के सप्लायर्स को पे आउट करने वाले, हर चीज़ का आपने एक प्लानिंग कर लिया, एक रफ आइडियाज लगा लिए कि आपके पास फिगर आ गया. नाउ विद दैट प्लानिंग यू स्टार्ट टू एग्जीक्यूट, बिकॉज प्लानिंग से तो नहीं होगा, आपको रियल मैदान में उतरना पड़ेगा.
And when you entered in the real ground, you find that there are a lot of competitions. There are a lot of competitions. What pricing you have for that particular product or service is significantly higher or slightly lower. आपको देखना पड़ेगा. Start to finding out and visualizing about your product and service, whether your product and service is going to meet the expectations of the customer or not. प्लानिंग के साथ आप ये एग्जीक्यूट करना शुरू करते हो कि आपका एक्चुअल्स क्या होता है. एंड व्हेन यू डन योर बिजनेस फॉर ए क्वार्टर, एटलीस्ट आपके पास एक क्वार्टर के एक्चुअल्स नंबर आ गया. नाउ स्टार्ट टू कंपेयर दोज नंबर विद द प्लान्ड नंबर दैट यू हैव प्रोजेक्टेड. स्टार्ट टू डू द प्लानिंग. और ये स्टार्टअप पे बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को समझिए, अपने बिजनेस के नंबर को कंपेयर कीजिए. 3 महीने पहले आपने क्या प्लान किया था, एक्चुअल में आपने क्या किया, एंड व्हाट एफर्ट्स यू हैव, एंड ब्रिंगिंग दैट एक्चुअल्स नंबर, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो जब आप 3 मंथ के नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, दैट व्हाट यू हैव सेल प्रोजेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअल सेल्स यू हैव डन, व्हाट द इन्वेस्टमेंट यू हैव प्रोजेक्टेड एंड व्हाट इन्वेस्टमेंट यू हैव डन, how many suppliers you have projected at that point of time, and how many suppliers you have engaged for delivering the product or service to your customer. इन सब का comparison करते हैं. And while you are doing the comparisons, you find out some reasons of the failures or non meeting the numbers. Because chances बजट से ऊपर, प्लान से ऊपर काफ़ी कम होते हैं कि आप स्टार्टअप में एक क्वार्टर में आप मीट कर सकें. तो you will have the learning phase. And that's why I told that you'll have a 730 days, a minimum fund in your account to manage your business, to run your business. तो एटलीस्ट 2 साल तक के लिए आपको फंड रखना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट 3 मंथ, 3 मंथ तक तो आपने कर लिया. अगेन यू स्टार्ट द नेक्स्ट 3 मंथ विद द करेक्टिव एक्शंस कि आपको और आगे क्या करना है. वेदर यू हैव टू बिल्ड अप एंड डूइंग मोर मार्केटिंग्स. कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोग नहीं जान रहे हैं. यू विल डू मोर मार्केटिंग्स, एंड व्हाइल यू आर डूइंग द मोर मार्केटिंग यू विल हैव ए सेल्स पीपल्स who are going to negotiate with the customer, please the customer and closing the deals. ये आपको करना पड़ेगा. Depending upon the volume and the worth, you are starting to hire to the sales people, the efficient sales people who are working on your behalf in the market to go and please the new customer, to close the deal with the customer. ये आपको देखना पड़ेगा. What target you have taken in your planning, आपने जितने कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस किया था, क्या आप 6 महीना के अंदर वो फुलफिल किया आपने. एंड देन अगेन स्टार्ट टू डू द क्वार्टरली एनालिसिस. फर्स्ट quarter you have done the analysis and find out the rectifications that what you have to do in the next quarter. You have started to analyze in the second quarter, that is the 6th month, and 6 महीना में आपने क्या प्लान किया था और क्या एक्चुअल किया. That is important. Then start to find out again the corrective action that what you have to do in a Q3. इन Q3 में आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करेक्टिव एक्शंस आपका है, जो प्लान्स आपने लिया था क्या आपने उस प्लान के हिसाब से काम किया. बिकॉज इन द नेक्स्ट क्वार्टर इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड ए 6 month एंड यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द मार्केट विद लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. कि आपका बिजनेस का वैल्यू कितना है, आपका बिजनेस कितना आगे ग्रो करने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या आउटकम आने वाले हैं, दैट यू नो बेसिस ऑफ द फर्स्ट 6 month. नाउ इन द थर्ड क्वार्टर, दैट इज Q3, you have started to focus with more progress, with more efforts, with more enthusiastic, with more willingness कि इस क्वार्टर में कुछ अच्छा करके दिखाना है. That what we have the shortfall in first quarter and second quarter, then we will meet in the third quarter and start to again collaborate with the teams to leverage with more spirit and to bring more growth that you have projected. थर्ड क्वार्टर में फिर अगेन आप मार्केट्स में जाते हैं, मार्केटिंग्स करते हैं, सेल्स करते हैं एंड पूरी टीम स्पिरिट के साथ करते हैं. देन यू अगेन एंड अप विद द थर्ड क्वार्टर व्हाट द नंबर यू हैव एंड स्टार्टेड टू अगेन कंपेयर विद द फर्स्ट 3 क्वार्टर द प्लान वर्सेस एक्चुअल. अगेन यू फाइंड कि कहीं ना कहीं नंबर्स मीट नहीं हो रहे हैं. तो नाउ यू स्टार्ट टू फाइंड आउट एंड डू सम करेक्टिव एक्शंस विद योर प्रोडक्ट और सर्विस. Because you have spent the 9 months and you are not able to identify who is your right customer.
For any business, the right customer is that who has the money to buy your product or service, who has the need of your product and service, and who has the willingness to afford your product and service. कस्टमर तो आपके वही बनते हैं ना, हर कोई तो कस्टमर आपका नहीं बन सकता है। तो आपने 9 मंथ लगाने के बाद अगर आपने कस्टमर नहीं बना पाया, इट मीन्स यू हैव ए प्रॉब्लम विद योर प्रोडक्ट और सर्विस। आपको उसके ऊपर मंथन करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि व्हाई योर प्रोडक्ट एंड सर्विस इज नॉट एडिंग द वैल्यूज, व्हाई योर प्रोडक्ट एंड सर्विस इज नॉट द कस्टमर्स आर डिजायरिंग। ये सोचना पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर जिसके पास मनी है, जिसको जरूरत है और जिसको इच्छा है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस का, वही आपका कस्टमर बनेगा। यू हैव डन द मार्केटिंग, यू हैव अगेन डन द सेल्स, यू हैव क्लोज द डील विद द कस्टमर, नॉट एबल टू परफॉर्म एज पर द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। तो आपको सारे मंथन करने पड़ेंगे, बिकॉज 9 मंथ आपने लगा चुके हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, that is important. So start with the new spirit, start with the new willingness to find out the new ventures and start to create some more incredible growth, and that projection that you have taken that you are going to create that, उसके साथ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, isn't it? तो जब आप 4th क्वार्टर में जाते हैं, Q4 में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नंबर को कन्वर्ट करने में पॉसिबिलिटी दिखा पाते हैं। एंड द रीजन बिकॉज व्हाट यू हैव डन द मिस्टेक इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर दैट यू आर नॉट डूइंग इन द Q4। तो आपकी प्लानिंग के हिसाब से टू द एक्सटेंट आपका नंबर कहीं ना कहीं एक साल में मीट कर पाते हैं। नाउ विद द प्लानिंग व्हाइल यू आर स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर, न्यू स्टार्टअप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। Whatever the product and service you have launched and the customer are not accepting, the customer are not giving the more weightage to your product and service, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, रेगुलरली मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपने ब्रांड वैल्यूज को बताना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, सेल्स कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी, एरियाज को देखना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। तो स्टार्टअप्स जिनको रावण का दिमाग लेकर के आना पड़ेगा एंड 10 तरह की चीजें देखनी पड़ेगी, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग द स्टार्टअप, व्हाट इज योर फर्स्ट फोकस टू क्रिएट द सेल्स, व्हाट इज द फर्स्ट फोकस टू क्रिएट द सेल, क्रिएट द सेल, बिकॉज मोर सेल्स विल हेल्प यू टू क्रिएट द मोर रेवेन्यूज, मोर रेवेन्यू विल हैव द मोर रिसीवेबल विल हैव द मोर बैंक बैलेंस, दैट इज द रिसीवेबल टू रिसीव। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट टाइम जब स्टार्टअप स्टार्ट करता है बिजनेस के, ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, ज्यादा सेल्स होगा तो ज्यादा रिसीवेबल आएगा, ज्यादा रिसीवेबल होगा तो ज्यादा बैंक बैलेंसेस बनेंगे, एंड दैट इज द प्रीमा फेसी द फंडामेंटल दैट द स्टार्टअप्स आर प्रोजेक्टिंग फॉर। तो 1 साल का प्लानिंग टू द एक्सटेंट आपने कर दिया, and now with that planning when your business now is supposed to grow in 2 years, you have the good business now and you are out from the survival. In the first 2 year, where first year you have a complete survival, you have the more firefighting to create the business, to manage the business. In the second year you have added some values and to be able to create the stable business. Now in the 3rd year to 5th year, what you have to do here? Now you have the stable business, you have the good revenue, you have the good profit, good investment, good assets you have now. What you need to do here to create the significant growth in your business? Here you have to again go to analysis the सपनों का दुनिया, अपने सपनों का नंबर्स। पता है सपनों का नंबर्स का एक अलग ताकत है। आपने बिजनेस को स्टेबल बना लिया, नाउ दिस फ्रॉम स्टेबल बिजनेस टू द एक्सीलेंट बिजनेस नंबर्स, ये आपके सपनों का नंबर से आपके ये स्टेबल नंबर्स टू द एक्सीलेंट नंबर ऑफ बिजनेस, ये आपको कर सकता है। आपके सपनों का नंबर्स में बहुत ताकत है। एंड हाउ यू आर गोइंग टू फुलफिल दिस द ड्रीम्स नंबर्स, you have the planning, now you started to create the budget, what you have the budget for the current year, what you have the budget for the next year or next to next year that you have projected, you start to create the forecast number as well, the budget you have prepared for a year ना, 1 साल का बजट बनाया ना, रीफोरकास्ट आपका 2 महीना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 महीना का बनाओ। कौन सा बिजनेस आपके फर्स्ट 2 मंथ में आने वाले जिसको आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हो, रेवेन्यू बना सकते हो,
बिकॉज अब एक साल की बात करेंगे, हो सकता है एक साल क्या 6 महीना बाद क्या बिजनेस में होने वाला, यू इवन डू नॉट नो। तो एक साल तक आपने बजट तो जरूर बनाया, बट फॉर गेटिंग द एक्चुअल नंबर, एक्यूरेट नंबर, यू हैव ए रीफोरकास्ट, दैट इज कॉल्ड द फोरकास्ट नंबर। तो फोरकास्ट रीफोरकास्ट जब आप बनाते हो तो वहां पे आप फाइंड आउट कर पाते हो कि व्हाट यू हैव द एक्चुअल forecast that you are going to close the number in the first month and the second month. कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ स्टार्टअप 4 महीने के लिए बनाते हैं। इट इज अप टू यू ओनली, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज द सपनों का नंबर्स, आपके अपने सपनों का नंबर्स है। 2 मंथ का बनाओ, 4 मंथ का बनाओ, किसने मना किया आपको? हु हैज स्टॉप्ड यू? नोबडी हैज स्टॉप्ड यू। सो इट इज इंपॉर्टेंट हियर, जब आप रिफोरकास्ट नंबर बनाते हो, फोरकास्ट नंबर बनाते हो और उसको कंपेयर करते हो एक्चुअल से, उसको कंपेयर करते हो बजट से, तो नाउ यू हैव द 3 नंबर, द बजट नंबर, द फोरकास्ट नंबर, द एक्चुअल नंबर। अब इन तीनों का कंपेयर करो। जब आपने बजट बनाया था, व्हाट यू हैव द प्रोजेक्शन, एंड द प्रोजेक्शन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, you have to broadly see the every numbers, whether you talk about revenue, expense, the assets, liability, every number that you have to see whether it is pertaining to P&L or balance sheet. आप उसको जज करो, what you have taken the budget, what you have the forecast and what you have the actual. जब आप कंपेयर करेंगे and do the brainstorming, जब आप करेंगे आपको पता चलेगा what is the gap and where is the gap, कहाँ है और क्या है गैप, एंड अकॉर्डिंगली यू वुड बी एबल टू टेक ए डिसीजंस टू क्रिएट द बेटरमेंट विद मोर प्रॉफिट, क्योंकि आपका बिजनेस स्टेबल से अब एक्सलेंट बिजनेस की तरफ जा रहा है। सो दैट एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, दैट एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हाइल यू आर डूइंग द एनालिसिस विद योर बजट, फोरकास्ट एंड एक्चुअल, you would be able to see, you would be able to know that where is the gap and what is the gap. See cost center wise analysis, see project wise analysis. आपको जिस तरीके से देखना है आपका बिजनेस का वर्टिकल क्या है, मॉडल क्या है, उसके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस शुरू करिए। उस एनालिसिस में आपको पता चलेगा ओके, आवर ऑपरेशंस कॉस्ट हैज इंक्रीज, our HR cost has increased, our finance has not performed as per the expectations, here cost is increasing, our other cost is increasing. There must be a certain percentage in the budget. While you have the 100 rupees revenue, ideally you have the direct cost up to 45 to 50% of the revenues. उसके बाद आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट आते हैं, तो आप इसकी एनालिसिस करते हो। इफ यू हैव द डायरेक्ट कॉस्ट that you have considered in your budget around 45% of the revenue, why it has been come the 55% in actual, ये 10% बढ़ कैसे गया? तो जब आप ये एनालिसिस करेंगे सपनों की नंबर के साथ में एक्चुअल नंबर्स का, आपको पता चलेगा कि 10% बढ़ोतरी कैसे हो गई, and then you will be able to know that where is the gap and what is the gap, and you will do the corrective actions. You will do the corrective action. See, in a business, the business method, the business science has never changed. समय आपको जो चेंज कराता है ना, वो आपकी मार्केटिंग के मेथड्स को चेंज कराता है। क्या आपके कस्टमर चेंज हो रहे हैं? क्या आपके सप्लायर चेंज हो रहे हैं? क्या आपके एम्प्लॉयज चेंज हो रहे हैं? इनके काम करने का तरीका और इनके पैटर्न, इनके मीडियाज, इनके एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें चेंज हो रही है, बिकॉज बेसिस ऑफ हाउ द इंडस्ट्रीज आर वर्किंग, हाउ द ग्लोब्स आर वर्किंग, उसके बेसिस पे चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट एज ऑफ नाउ, देयर इज नो एनी मीनिंग ऑफ द फिजिकल एडवर्टीजमेंट। हु इज डूइंग द न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट? हु इज डूइंग द होर्डिंग बोर्ड एडवर्टीजमेंट? अब कौन करता है? बिकॉज बिजनेस का मॉडल चेंज हो गया, एडवर्टीजमेंट का मॉडल चेंज हो गया है। अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं, जहाँ पे एक बार सोशल मीडिया पे देख करके मिलियंस पीपल को एक बार में दिखाते हैं। सी द पावर एंड एम्पावरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो बिकॉज द टेक्नोलॉजी एम्पावर कर रहा है, तो आपको भी उस हिसाब से अपने बिजनेस के मॉडल्स को चेंज करने पड़ेंगे। बट बिजनेस का साइंस तो सेम है, सेम कस्टमर, सेम सप्लायर, सेम टीम्स।
So it is important that while you are running your business, you have to genuinely see that what is the base requirement, how you are going to find the customer, how you are going to work with the supplier, how you are going to negotiate with the supplier with the best rate, and how you are going to close the deal with the customer with the best rate. It all important, and that's why I am telling that कि जब आप बिजनेस करते हो ना, आपके पास रावण का दिमाग होना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस में आपको 10 तरह की चीजें सोचनी होती है, 10 तरह की चीजें करनी होती है. So that is more important. And while you are going to do the 10 things in your business, the important thing here is कि आप अपने सपनों के नंबर्स का एनालिसिस कैसे करते हैं. बिकॉज इस सपनों का नंबर्स जब एक्चुअल में कन्वर्ट होता है ना, तो आपकी किस्मत और आपके नंबर्स दोनों बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं. तो सपनों का नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर दैट व्हाइल यू आर डूइंग द बिजनेस, कीप द बिजनेस फॉर एटलीस्ट द फंड फॉर 730 डेज. 2 साल के लिए कम से कम फंड रखिए. स्टार्टअप में आप ध्यान दीजिए, क्वार्टर वाइज उसको आप रिव्यू कीजिए, फाइंडिंग आउट द करेक्टिव एक्शंस and implement those corrective actions in your business to be able to know about the new course of action that you have to do in your business. After spending 1 year, get to know that what are those areas where you have to require the improvement. If the product and service are not as per the expectation that what you have planned for, change the methods and start a refresh with the new willingness, with the new innovations, with the new spirit. तो आप 2 साल में आपको पता चल जाएगा. देन स्टार्ट टू क्रिएट फ्रॉम स्टेबल टू द एक्सलेंट नंबर्स विद द हेल्प ऑफ बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड कंपेयर विद द एक्चुअल्स. एंड ये आपको एनालिसिस करते रहना है. ये एनालिसिस आपको करते रहना है, बिकॉज दिस इज नॉट द पोस्टमार्टम और हिस्टोरिकल नंबर्स दैट यू आर गोइंग टू एनालिसिस. दिस इज नॉट द हिस्टोरिकल नंबर्स, दिस इज नॉट द पोस्टमार्टम नंबर्स. ये हमेशा आपको सिनेरियोस को बताएगा, व्हाट यू हैव टू डू. अभी ज्योग्राफिकली कैसे काम करना है, कॉस्ट सेंटर वाइज कैसे करना है, प्रोसेस वाइज कैसे करना है, बिजनेस वाइज कैसे करना है, रीजन्स वाइज कैसे करना है, सेगमेंट वाइज कैसे करना है. ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, और ये सारे सपनों का नंबर्स आपको एनालिसिस करना होता है. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, व्हाइल यू आर गोइंग टू एनालाइज द सपनों का नंबर्स, you will always have a good profit in your mind. You always have a good insightful informations in your mind. You always have a new encouragement in your mind because you have the sapno ka number and you are looking the profit. You are looking the profit. जो सपनों का प्रॉफिट देख रहे हैं, जब आप उसको देखते हैं ना, आपके अंदर एक नई एनर्जी, नए उत्साह आता है, नया उमंग आता है. एंड विद दैट न्यू एनर्जी, न्यू उत्साह, यू स्टार्टेड टू क्रिएट न्यू थिंग्स. You started to create the new opportunities. That is how it is important. तो सपनों का दुनिया जो है, विद सपनों का नंबर्स, ये स्टार्टअप बिजनेस से लेकर के जब आप प्रोग्रेसिव बिजनेस तक, टू प्रोग्रेस बिजनेस, जब आप एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, आपकी प्रॉफिट अच्छी हो जाती है, आपका कद बड़ा हो जाता है, आपका बिजनेस बढ़ जाता है, तो आपको पता चलता है कि सपनों का नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट थे. एंड दैट यू हैव टू विजुअलाइज. सो माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, while you are doing the business, no matter where you are, who you are, which business you are deal for, it is important. And particularly I am requesting to the micro, small and medium entrepreneur, start to create the sapno ka numbers and visualize those numbers in your brain, in your heart, in the every parts of your bodies. Start to visualize. Get more risks with that particular plan and budget number, and create the bigger opportunities in the market. Everything is possible in the market, and there are huge amount of opportunity that you have. It's just because that you are not looking that particulars and you are not able to see from that angle. That is the problem. So start to elevate more business opportunity with the help of सपनों का नंबर्स. पहले टारगेट तो सेट कीजिए, टारगेट तो सेट कीजिए कि मुझे कितना रेवेन्यू पहुंचना है, कितनी रेवेन्यू लेकर के जानी है. 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख. सेट द टारगेट एंड स्टार्ट टू अचीव दिस टारगेट.
with the help of teams, with the help of suppliers. And that is the beauty of the business, that when you start to create the dream, you will be able to fulfill to the extent. गिरोगे ना, हारोगे ना, गलती करोगे ना, what is the problem? And that's the beauty that I just would like to keep in notice in the entrepreneurs, particularly in micro, small and medium entrepreneurs, that they should focus on the sapno ka number. They start to create the budget. They start to create the forecast. They start to compare the budget, forecast and actual and take the corrective actions. And while they are taking the corrective actions, they start to create the more risks with more gain. Start to educate to the team's member who are the real entrepreneur to create the larger opportunities in your business. No matter whether you have a 3-member team size or 30-member team size. Start to create and more leveraging situations for the entrepreneur, that your team's member, and they will help you. They will work on your behalf to create more business opportunities and to have a phenomenal growth over the period of the time. प्रॉब्लम सिर्फ स्टार्टअप में होती है, जब एक बार बिजनेस आपका स्टेबल हो जाता है, एक्सीलेंसी पे पहुंच जाती है ना, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस. स्टार्ट टू टेक दैट करेज टू योर बिजनेस. एंड व्हाट हैपेंड माय डियर फ्रेंड, while you are doing the business for 10 years, 15 years, and if you are not able to add the values to your business, if you are not able to add the growth in your business, what are the meaning of this business? In that case, you are not the true entrepreneur, intelligent entrepreneur. You will be called as a mediocre entrepreneurs, and average entrepreneurs, a poor entrepreneurs. तो ये आपको डिसाइड करना है कि 10 साल धंधा में देने के बाद आप इफिशिएंट और इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर कहलाना पसंद करेंगे कि आप मीडियोकर, एवरेज और पुअर एंटरप्रेन्योर कहलाना पसंद करेंगे. बिकॉज एक बार जब अपना धंधा बना दिया, धंधा सेट कर दिया, धंधा के हाथ पांव लगा दिए, धंधा को चलने लायक बना दिया, वो धंधा दौड़ेगा, वो धंधा दौड़ेगा, वो बिजनेस दौड़ेगा. सो इट इज हाउ इम्पॉर्टेंट फॉर द entrepreneur and the business owner. Start to create more business opportunity, elevate more business opportunities. And while you are going to elevate more business opportunity, creating that kind of tremendous opportunities in your business, you will have a sure phenomenal growth. You will have a organic growth, and with that organic growth, you will have more possibility to extend your business across globe. तो ये पावर है सपनों का नंबर्स का. ये पावर है सपनों का नंबर्स का. तो आप भी स्टार्ट कीजिए, सपनों का नंबर्स क्रिएट कीजिए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू क्रिएट द बिगर अपॉर्चुनिटी विद द बिगर रिस्क, विद द बिगर रिटर्न. सो डू यू लाइक टू क्रिएट दैट सपनों का नंबर्स इन योर बिजनेस? Do you like to create that sapno ka numbers in your business? Of course you would like. Of course you would like. I think this is going to help you to create the bigger risk, bigger gain. My dear friend, this is very important. The entrepreneurs, if you are starting the journey, you are fortunate that you are working as an entrepreneur. Everybody has not that kind of capacity that you have. And if you have started the entrepreneurship journey, जब आपने सर जो है डाल ही दिया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, तो फिर डरना क्या, डरना क्या? सो दैट मैजिक दैट यू हैव टू क्रिएट इन योर बिजनेस एंड बिकम ए मैजिशियंस विद द सपनों का नंबर्स, विद द सपनों का नंबर्स. इफ यू फाइंड दैट these videos are adding the values to your business, adding some growth in your business, adding some valuable informations in your business, start to connect with me. Start to subscribe this, like this, and forward this to your neighbors. अपने करीबी को दीजिए. हो सकता है उनके काम आ जाए, हो सकता है उनके टचेबल में आ जाए. And that's the real meaning of the true entrepreneurs. जो ये करते हैं ना,
अगर उनको अच्छा लगता है ना, वो आगे भी बताते हैं. So these are the real informations, a practical information that I am exploring in front of you. You start to elevate these informations in your business, put these informations in your business and get it a sound system, sound structures to get more growth in your business. To get more growth in your business. How this is going to create the bigger opportunities in your business, particularly for the micro, small, and medium entrepreneurs. Start to create the larger opportunities with the Sapno ka numbers, compare with the forecast and actuals, and get it to find out the corrective actions and explore more possibilities in your business. Because at the end of the day, Sapno ka numbers with the actual number and corrective actions is going to ultimately give you the right punch to create the right opportunities in your business. This is Sanjay Singh signing out. Until we meet again, thank you very much.